जब जब मनुष्य आपकी राह पर अहंकार का लिबास डालकर चलने लगे, जब जब धरती आतताइयों के अत्याचार से थरथराई और जब जब अधर्मियों ने कृष्ण मुनियों का नरसंहार किया, तब धर्म की रक्षा के लिए हर युग में भगवान का अवतार हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसा ही अत्याचारी राजा था कंस, जो अपनी प्रजा के लिए अत्यंत क्रूर था और विष्णु मुनियों का नरसंहार करता था। मैं कंस हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा राजा नहीं, तुम्हारा अन्नदाता, तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम्हें मारने वाला भी मैं और मुझसे तुम्हें बचाने वाला सिर्फ मैं। परंतु इस पापी की भी एक कमजोरी थी, इसकी छोटी बहन देवकी का विवाह कंस ने यदुवंश के राजा वासुदेव के साथ कराया। सौभाग्यवती भवा। चलिए मैं स्वयं सारथी बनकर रथ में तुम्हें छोड़ने जा रहा हूं। अत्याचारी कंस, इस देवकी को तू अपने हाथों से विदा करने जा रहा है। उसी देवकी का आठवां पुत्र तेरा काल होगा। मेरा होने वाला भांजा मेरा काल बनेगा? असंभव। रुको कंस, देवकी तुम्हारी बहन है और आज उसका विवाह हुआ है। ऐसी स्त्री पर शस्त्र उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जन्म लेते ही देवकी का हर संतान तुम्हें अर्पित कर दूंगा। जब तक मेरे काल का अंत नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें मेरा बंदी बनकर रहना होगा। जैसा कि मैंने वचन दिया था, ये है मेरी पहली संतान। तुम्हारी पहली संतान? इससे मुझे कोई भय नहीं। मेरा काल तो तुम्हारे आठवें पुत्र में वास करता है, उसे लेकर आना। मैं प्रतीक्षा करूंगा। नारायण नारायण, मूर्ख ना बनो कंस। देखो इस कमल के फूल को, इन पंखुड़ियों में कौन सा पहला है और कौन सा आखिरी। इसी प्रकार तुम्हारा काल इन्हीं आंखों में से किसी में वास कर सकता है। हमारी बाकी संतानों की तरह भ्राता श्री कंस इसको भी वध कर देंगे। नहीं देवकी, मुझे भगवान की लीला पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने हमारी आठवीं संतान के नियति में जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा। देवकी वासुदेव, भयभीत ना हो। सहस्र वर्षों की तपस्या और मेरे प्रति अतः प्रेम से प्रसन्न होगा। मैंने तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वासुदेव, विलंब ना कर।
और मुझे शीघ्र ही यमुना के उस पार गोकुल ले चलो। वहां नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। मुझे उसके पास से लाकर उसकी बच्ची को यहाँ ले आओ। शीघ्र करो वसुदेव। कृष्ण पक्ष की इस काली रात में जहां वो मृत्यु रूपी कंस कभी भी प्रकट हो सकता है, इस खड़े पहरे के बीच मैं इस बालक को गोकुल कैसे लेकर के जाऊं? मैं उसको इसी वक्त बाध्य कर दूंगा। ये तो एक कन्या है, ये आपका प्राण कैसे हो सकते हैं? मृत्यु जब बेटा और बेटी में अंतर नहीं करती तो मैं क्यों करूं? मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मेरा काल 9 जन्म ले चुका है, जगत के तारनहार आ चुके हैं। मेरे जैसे पापियों का नाश अब निश्चित है। जाओ जाकर पिछले 10 दिन में जन्मे सारे बच्चों की हत्या कर दो। पूतना ने एक एक करके सैकड़ों नवजातों की हत्या कर दी। मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। मैंने सुना है कि आपके घर में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया है। मेरे आशीर्वाद से आपका पुत्र अमर और महाशक्तिशाली हो जाएगा। बकासुर, कोई वापस क्यों नहीं आ रहा? एक तरफ कंस राक्षसों को भेजता गया और भगवान एक एक करके सबका वध करते गए। भगवान ने अपनी लीलाओं से सबका मन मोह लिया। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए उनके प्रति लोगों में प्रेम बढ़ता। अरे मेरे पैर! हाय क्या हुआ? मैया, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तो पूछना। कभी बोलता है मुझसे बोलोगे, कभी बोलता है मैंने आखिरी जीवन में नहीं देखा, कभी बोलता है कुछ पूछना है। मैया, क्या मैं नहीं हूँ? कौन कहता है? कौन कहता है तू मेरा बेटा नहीं? कान्हा, तू मेरा लाल है रे। सब कहते हैं, सब कहते हैं। बाबा मैया तुम्हें दुकान से खरीद के लाया है। कौन कहता है? कौन कहता है ये सब? तनिक
सामने तो आए। बिल्कुल ठीक है यशोदा मैया, कान्हा इसी रंग के लोगे हैं। मैं अपने कान्हा को क्यों दंड दूंगी? उसने हमारे पापा की मटकियां फोड़ डाली। अरे पर क्यों? कान्हा ऐसा क्यों करेगा? हमारे घर में अपना इतना दूर नाखून है, तो हम झूठ क्यों करेंगे यशोदा मैया? क्या हमें कान्हा की चुगली करने में आनंद आया है? इस सावला सलोना मनमोहनी मुस्कान वाला पूरे संसार में हमारे कान्हा के सिवा कौन है? मैया ये झूठ बोल रही है, तो जरा मेरी आंखों में देख के बोलो, क्या मैंने जुड़ा के माखन खाया? हे भगवान, मैं क्या करूं? कहा भी नहीं जाता और कहीं बिना रहा भी नहीं जाता, देखा भी नहीं जाता और देखे बिना रहा भी नहीं जाता। कान्हा हर बार हम पर जादू चलाकर हर बार बच जाता है मैया। पूरा बिल्कुल किसी के लिए गानों पर मोहित थे। नारायण ने अपने इस अवतार में देवराज इंद्र के कुपित होने पर उनके प्रकोप से गोकुलवासियों को गोवर्धन पर्वत उठाकर बचाया और उनका अहंकार खोया। नारायण ने आगे कालिया नाग के विष से यमुना के पवित्र जल को मुक्त कराकर कालिया नाग का भी अहंकार खोया। कहाँ है मेरा काल? कहाँ छिपा है वो? सामने क्यों नहीं आता? आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया है। एक बच्चे की खोज में 10 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक ना कोई संकेत, ना कोई चिन्ह। अक्रूर, अब तो मैं अपने प्रिय भांजे से मिले बिना रह नहीं सकता। अब विलंब मत कीजिए क्रूर जी, मुझे मेरे भांजे से मिलाइए। काका, आपके आगमन से हम धन्य हुए। पुत्र, कंस ने एक मल्ल युद्ध आयोजित किया है। उसने तुम्हें निमंत्रण भेजा है, तो सबके सामने तुम्हारा वध करना चाहता है, और यह शुभ समाचार तुम तक पहुंचाने का दुर्भाग्य मुझे सौंपा गया है। आप चिंतित ना हो करो काका, कंस की मृत्यु का समय अब आ गया है। उसके भार से धरती को मुक्त करने का समय अब आ गया है। अब हमारे अन्नदाता राजा विराज महाबली कंस महाराज
प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि कृष्ण और बलराम के साथ क्रीड़ांगन में पधार रहे हैं। मैं आ गया हूँ। अब 10 वर्ष से मुझे अंदर बिना आपका निमंत्रण स्वीकार करके मैं आ गया हूँ। जब अत्याचार अपनी अति पर पहुँचता है तो वो स्वयं अपने अंग को निमंत्रित करता है। आपने भी मुझे स्वयं निमंत्रित किया है मामा। धन्यवाद। यह तो मन युद्ध के बाद ही पता चलेगा। मखिया वासियों, हर युग में हर आतंकवादी का यही अंत होता है। दिव्य है कृष्ण का धन और कृष्ण की जो नहीं समझ जाता है वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसे पुनर्जन्म नहीं लेना होता। वो तो सदा के लिए कृष्ण के लोक का वासी हो जाता है। कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो सदा It was an astounding experience for all us as it showed how there is always an end to the evil. We would like to take a moment to thank Dr. Nizam Bari for his exemplary help in choreographing this performance. And the whole world team would like to thank Shubham Giri for his contribution to the video editing as well. Now I would like to invite Jonali, Kalida and Radha to present their Odissi dance on a sweet song which describes how to apply the teachings of the Bhagavad Gita. Let's invite them with a great applause.
beautiful and engaging performance. Now we would like to welcome Mr. Tukaram Das, Director of ISKCON Youth Forum, Bhubaneswar, onto the stage. Please welcome. Thank you, sir. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. हरे हरे। हम लोग सोच रहे थे इतना सारा प्रसाद लाए हैं कहाँ बांटेंगे, कोई आ नहीं रहा, लेकिन now we are confident कि everybody whatever we have brought we will finish. So thank you all very much for your
encouragement because आप लोग आए हैं यहाँ पर इतना उत्साह के साथ, हमको भी उत्साह मिल रहा है। ISKCON यूथ फोरम भुवनेश्वर की तरफ से हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं, आपके कॉलेज मैनेजमेंट को धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ श्रीनिवास सर का, आपने हमको चांस दिया, और मैं और धन्यवाद करता हूँ मंगीपुर सर का कि आपने हमको चांस दिया यहाँ पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग काफी उत्साही हैं। आप में से कितने लोग ISKCON भुवनेश्वर गए हैं? ओ बहुत कम। तो ISKCON भुवनेश्वर में आपका स्वागत है, आप लोग आइए समय निकाल करके। ISKCON temples are not just temples, ISKCON temples are educational centers। वहाँ पे आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन दिया जाता है, वहाँ पे आपको कल्चर के विषय में बताया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं म्यूजिक, डांस, प्रसादम। You can come sometime, stay in a temple, attend the morning program, attend kirtan, dance with us, have prasadam, and rejuvenate yourself spiritually। हम rejuvenate करने के लिए pubs में जाते हैं, bars में जाते हैं, आप temples में भी आके देखिए, you'll have lots of fun। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, हमारे बीच में है अमोघ लीला प्रभु जी, बहुत समय निकाल करके आप सभी के लिए वो आए हैं बहुत दूर से। प्रभु जी आज रात को ही जाने वाले थे, शाम का प्रोग्राम करने के लिए उनका दूसरा एंगेजमेंट आया है अहमदाबाद से। मैंने रिक्वेस्ट किया प्रभु जी प्लीज आप मत जाइएगा, ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है, तो उन्होंने अपना को एक्सटेंड किया, तो हम प्रभु जी सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Now it is time for the most awaited talk of today's evening. We invite His Grace Amogh Lila Prabhu, who is connected with ISKCON for the last 21 years. He is not only guest faculty of IIT Bhubaneswar, but is also a motivational source for the youth. We welcome you, sir. Thank you. Thank you everyone. It's really a good fortune. I'm very fortunate to be amongst all of you. Thanks to IIT Bhubaneswar and all the organizers who made this program actually get materialized. And we are feeling so very fortunate to be amongst all of you. And such beautiful performances. I was thinking that, why a talk? We are already done. This is such a beautiful evening already. But thank you very much once again. So, मुझको जो टॉपिक दिया गया है वो है the bliss of solitude। बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, the bliss of solitude। So before I begin, one question to all of you: what's the difference between solitude and loneliness? Anybody? What's the difference? Bible is ना? Solitude, loneliness, solitude. In solitude we are lonely. When we are lonely, that's a solitude. Yes, please. सॉलिट्यूड मतलब हमारी चॉइस होती है। सॉलिट्यूड हमारी चॉइस होती है और लोनलीनेस हमारी चॉइस नहीं होती। इट इज इम्पोज्ड। इज इट लाइक दैट? ओके, गुड अटेम्प्ट, नाइस। और कोई पीछे बालकनी सीट वाले? एनीबॉडी? यस यस। वेल कम फॉरवर्ड। मेरे आगे पीछे ना, ऑल आई वांट इज कान। In loneliness, we feel lack of social connections. In solitude, we do not. In solitude, we have social connections. In solitude, we do not feel that we are lacking something. We are already engaged in ourselves. Already engaged, but not married. Okay, anybody else? Yes. Yeah, please. Now forward. Difference between solitude and loneliness. Solitude brings happiness and peace, while loneliness brings sadness in our life. Very good. Okay, so one more. Okay, all right. Hare Krishna Prabhu ji, Hare Krishna everyone.
both solitude and loneliness, we are all alone by ourselves, but in solitude we enjoy our own company. Means we are filled within, but in loneliness we are not filled within. अंदर से खोखले पड़े होते हैं, चाहिए होता है किसी का सहारा, but in solitude खुद से ही भरे रहते हैं. Any ladies, क्योंकि नारी मुक्ति मोर्चा वाले मेरे पास मोटे से लड़ेंगे, सिर्फ पुरुषों को भी माइक दिया जाता है, दुनिया तो हमेशा माइक के पीछे रही है. Any lady would like to share? Yes. Any girl? Okay, they are in their solitude. Alright. So difference between solitude and loneliness. Of course, they are quite close, but actually they are not close at all. Although they appear to be synonymous to each other, but they are not. Like one boy said, when we are in solitude, then we are happy. So there is joy. J-O-Y. There is joyful contemplation when you are in solitude. But contemplation ka hota hai. When you have some substance in the heart, then you can have some joyful contemplation. Like when the poets, when they do some masterpiece, they are in solitude. When Valmiki Muni, when he was in solitude, and then he wrote the masterpiece Ramayana. So there is joyful contemplation when you are in solitude. O for optimum performance. When you are in solitude, you are in your best self. Solitude. You are the best self. You give your best. No distractions. Absolutely absorbed. And that's wonderful. So optimum performance is also there. And why? Why means yearning for blessings. In solitude, we are yearning for blessings. We are being prayerful. Like prayers are said, the prayer should not be emergency wheel in life. They should be the steering wheel in life. ऐसा नहीं जब emergency पड़ेगी तो प्रे करेंगे अरे प्रभु आप खोल देंगे ना इंसान. No, prayer should be the steering wheel in life, not emergency wheel. And prayers are so much required, blessings. So we should always yearn for them. Have you seen the duck? बतख कैसे चलती है पानी के अंदर? बड़ा smooth. लेकिन अंदर अंदर ना पावर मारी. And then externally we see that duck is floating on the water so smoothly. Similarly, in our lives, in case you want to sail very smoothly, we should always be yearning for blessings, yearning, blessings, blessings, blessings. That's so very important. Like, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा value किया जाता है talent. But if somebody is only having talent, that leads to arrogance. Only talent. But talent के साथ अगर अच्छा attitude भी हो, so talent plus good attitude makes you malleable, makes you more flexible. But in case you have talent plus good attitude plus good character, then you become trustworthy. That's even better. But in case you have got talent plus good attitude plus good character plus blessings, then you are capable. And becoming capable is more important, right? So we should have all the 4 ingredients. Which is the first ingredient? Talent. But plus good attitude, plus good character, and then plus blessings. Yes, the X factor is blessings. So J-O-Y. In solitude, we are in joy. But J for joyful contemplation. O for optimum performance, and Y for yearning for blessings. That's joy. But in loneliness, we are sad. जैसे ये बच्चे ने बोला, we are sad. So S-A-D. ऐसे क्या होगा? Self-abusing habits. अकेले हैं, कोई मुझे नहीं देख रहा. मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो मैं पब्लिक में नहीं कर सकता. Like you watch something. जिसके बाद में what tools, internet options, delete history. So people do that. पर एक चीज भूल जाते हैं. इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप ऐसा कर सकते हैं. या अगर आप एप्पल इस्तेमाल करते हैं, so command Y, select all, delete. पर ना delete history इंटरनेट ब्राउज़र में हो सकती है. पर एक जगह पर delete history का बटन नहीं है. यहाँ पे है
Okay, internet options. Okay, delete cookies, delete history. Press OK. हो गया. Can that happen? So इसीलिए when we are in solitude, we often become victim of self-abusing habits. ऐसा होता है. मुझे याद है मेरा एक दोस्त था, उसने बोला उसके नंबर खराब आते थे. कहते बेटा तेरे नंबर बड़ा खराब है. कहता पापा वो क्या है हमारे हॉस्टल में ना बाकी लड़के भी साथ में होते हैं ना उनका हाँ ही लगा रहता है. उसको अकेला कमरा मिल जाएगा ना बस फिर देखो आप. अभी तो फिर भी बेचारे एक दो बैक आती थी. कभी ऐसा हुआ कि पूरा बंदे का सेमेस्टर ही बैक चला गया. So when we are lonely, then we can become victim of self-abusing habits. Cheap thrill, but cheap thrill leads to so much guilt in the beginning and later on so much of suffering. That's what happens. और क्या होता है? A for addictions. Addictions envelop us when we are lonely. अकेले में क्या करें? कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं यार, कुछ क्या करें? Addictions. कई बार बोलते हैं लोग कॉलेज के दिनों में कहते ट्राई करते हैं यार ये तो 4 साल है भाई. जा सिमरन जा, जीने जा राहुल जा, जीने. And then during college days, people experiment as well. हमारे दिल्ली में तो there is red light area as well. कहता है तुम्हारा experiment क्या है? So जो experiment करके आते हैं, then father is not able to give any kind of aids for education because he already is having aids. So that's why. So this is what happens. Addictions they bind intelligence. और जितना ज़्यादा कोई lonely है ना, addictions उसको बहुत अच्छे से envelop करती है. Very stringent, very tightly. They get enveloped in addictions, and it binds intelligence. ऐसा नहीं ना कुछ लोगों को काम करने के लिए सुट्टा ब्रेक चाहिए होता है. काम करते रहते हैं भाई. मेरा lubrication खत्म हो गया. मेरे को lubricant चाहिए. And then they have lubricant in the form of sutta break. जाना पड़ता है, पापा करना पड़ता है. अब देखो बोरिस मैनो कहाँ पर है और यशवंत कानतकर कहाँ पर है. अब खुलेगी भाई यार. अब थोड़ा lubricant. But actually intelligence becomes bound. This is what happens actually. एक बार ऐसा हुआ कि टल्ली एकदम पूरा टल्ली हो पूरा absolutely drunk. They came to auto वाला. भैया हम वो कराट प्लेस छोड़ दो भाई. कहता हाँ बैठो. उसने देखा तीनों एकदम धुत. उसने कहा ऑटो वहाँ स्टार्ट किया. वही रुक गया. अरे आ गया. उधर जाओ. तो तीनों उतर गए. तीसरा उधर था. उसने जेब से पैसा निकालने वाला था लेकिन एक चपैट मारी उसने ऑटो वाले को लगा भाई ये दो तो पिए हुए थे, ये तीसरा वाला होश में था. तो बोला पता है मेरे को क्यों मारा? रैश ड्राइविंग. So once you are intoxicated, my God, your intelligence is bound. And when your intelligence is bound, you cannot really do something productive because my abilities and capabilities are depending on some chemicals. Smoking का एक definition ही है. Fire on one end, food on the other end. That's the way it is actually. So, but addictions कहाँ आती हैं? जब हम अकेले होते हैं, addictions वहाँ attack करती हैं actually हमको. Right? And D for depression. अगर आप अकेले हैं तो यही गम है. अब यार ना अकेले हैं तो क्या गम है? चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं. हाँ आपके बस में ही है सर. डिप्रेशन में जाना. Yes. So when we are lonely, then we get into depression. You'll be astonished to know all across the globe there are 450 million people victim of depression. And out of these 450 million people, 33 million people also attempt suicide. And every 40 seconds there is a suicide. Every 40 seconds. That is bound for 40, somebody in the world committed suicide. And the number of people killing themselves is twice the number of people being killed by somebody else. That means लोग दूसरों से कम दुखी हैं, लोग अपने आप से बहुत दुखी हैं. Strange data, but that's the reality.
actually. So people get into depression when they are lonely. But what's the solution? How to make our transition from from SAD to JOY? How to make this transition? इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है sharing your heart with someone. एक कहावत है ना, दिल जो खोला होता है यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ. दिल खोला नहीं है तो मैं अंदर ही तो मरता रहा, दिल खोले तुम्हारा औजारों से. So heart sharing is so very important. कभी-कभी हम लोग घुटते रहते हैं, just by sharing heart, you feel so light. In Ayodhya, or Lord Shri Ram, there was one department that you can come and share your heart. Solution नहीं, no solution. Just share your heart. That's it. Just by sharing your heart. आपने किससे experience किया है? दिल खोला ना किसी के साथ, आधे हफ्ते तो वही हुआ. Solution तो बाद में. Who has experienced this? Many of you. तो कई बार ना अंदर घुटते पूरे घुट ही जाते हैं. हार्ट शेयरिंग शुड बी देयर. ऑफ कोर्स द ट्रस्टवर्दी पर्सन. ऐसा नहीं होता ऑल इंडिया रेडियो है. आप उसके साथ हार्ट शेयर करने कहते हैं अच्छा ये बात अभी देखो. हाँ आईटी भुवनेश्वर बता जाने के बाद हाँ. So the person should have some maturity as well. जिसके साथ हम हार्ट शेयर करें. But we should share our heart with a mature person. And in this way we take association. और आप देखिए जो अच्छी एसोसिएशन है ना, this is real solitude. Good association, healthy association, empowering association, sanctifying association, that is real solitude. Actually, there was आपने जानते हैं Albert Einstein, the famous hockey player from Switzerland, from Germany. So when he formulated the theory of relativity, Albert Einstein, so अलग-अलग institutions में जाते थे, lecture देते थे theory of relativity के ऊपर. तो ड्राइवर था, वो भी बैठा करता था, वो भी सुना करता था लेक्चर. अब 4-5 बार हो चुका था. तो ड्राइवर को याद हो गया. ड्राइवर बोला एल्बर्ट सर एक बात बोलूं. हाँ बोल. ऐसा नाम इवन आई कैन डिलीवर अ लेक्चर ऑन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है अगली बार तुझे दी. सो जो एल्बर्ट आइंस्टीन था वो ड्राइवर की सीट पे बैठ गया और ये भाई साहब पोडियम पे आ गए, माइक पकड़ा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल भी और कमांड सी कमांड भी. सब ताली बजा दी. वाह क्या बात है. फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, कहता सर I got a question sir. Question? What is your question? और उसने हाइपर साइंटिफिक सा एक सवाल पूछ लिया उसने. Such an easy question. Even my driver can answer that. So even a driver could pose as Albert Einstein because of association. Association is so very important. Association is something which can make you. Association is something which can break you. Association is that very important. If you're not choosy about association, you become chooser. You're a chooser. So you should be very choosy. You may not have many friends who are giving you bad association. You may have few friends who give you good association. अच्छी संगति का होना बहुत जरूरी है. Like Manthara, she was bad association for Kaikeyi. Love of Kaikeyi for Lord Shri Ram was more than Kaushalya's love. पर हुआ क्या? Bad association. Manthara. And then Kaikeyi's love got perverted. So that's why we should be very choosy. हम किसकी संगति करते हैं? If the drop which falls from the sky during rain, if it falls in the mud, it becomes mud. If it falls on the lotus leaf, then it becomes dew. If it falls in oyster, then पर पानी की बूंदें सब सेम है. Depends on the association. तो आप किनकी संगति करते हैं? Your sangati can make your solitude into loneliness, and good association can convert loneliness into solitude. And real solitude is good association. That's the real solitude. Like Bhagavad Gita mentions that one should do meditation in a holy, secluded place. I सोच रहे हैं ये कहाँ मिलेगा? Because nowadays holy places are not secluded and secluded places are not holy. वैसा तो हुआ भी
You know, once I want to go, sometimes I go for marathon. When I do, I go for reading marathon. I read scriptures and I go to marathon. 8 hours, 10 hours, I do marathon. So sometimes I seek seclusion. कि मैं कहीं पर distraction free area में जाकर के I can study. So हमारे दिल्ली में जगह है तालकटोरा गार्डन में, यहाँ पर एक बहुत अच्छी जगह है. तो मैं झाड़ी की चीज़ है, मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ 2 लोग थे. God. So in Kali Yuga, holy places are not secluded, and secluded places. Oh, so sorry. So that's what people do when they are in seclusion, like that. So, or they are in a way, they are lonely, and that's why they are trying to curb each other's loneliness. But they are still lonely. Though भिखारी किसी को लूट भी लेना, भिखारी नहीं है. Right? So that's why one should have very healthy association, and that's real solitude. That's it. So one S is sharing the heart. Okay, sharing the heart. Another S is soul care. We should care for the soul. We care for the body so much. हमारी सारी language को सारा body में based है. How is everybody? Is anybody there? Somebody, everybody, anybody, everybody, body. Sir, on the soul भी है. What? Soul तो जूते के नीचे होता है. But nobody knows about soul. So क्योंकि हमें soul के बारे में पता नहीं होता, so that's why we don't worry about soul. But soul is also, we are real self, we are the soul, and soul has to be taken care of. People you will see even from glamour industry, power industry, even then they are lonely, even though they have everything which we think is success. Yet they are lonely. Why? Because they do not do soul care. Soul, spiritual care. आप किस तरह से Maslow's need hierarchy पढ़ी हुई है? NCERT, Maslow's needs hierarchy. किसको याद है? Maslow's need hierarchy तो भाइयों और बहनों, you know, there's physical needs, mental needs, social needs, intellectual needs, egoistic needs. नहीं यार? Okay, कोई बात नहीं, पढ़ा. So this is not NCERT book. It is Maslow's needs hierarchy. We have needs, it has got a hierarchy. Basic needs, physical needs. We eat, we sleep, we take rest, recreation, that's required. We have all got social needs. Hey, hi, how are you doing? Social needs, that's also our need. Intellectual need, कुछ नया सीखना. It's intellectual need being fulfilled. हमारी egoistic needs भी हैं. Somebody recognizes us. अरे आप तो इतना अच्छा खाना बनाती हैं, क्या बात है, हम तो उंगली चाटते रह गए. अरे भाई तूने क्या प्रोग्राम बनाया यार? अरे भाई साहब. Egoistic need fulfilled. Somebody appreciates us, recognizes us, that's egoistic need being fulfilled. But एक ऐसी need है which remains unentertained, and that's spiritual need. We often keep this need to be fulfilled after retirement. कहता है ये बूढ़े होके करेंगे यार, अभी तो ये जवानी है दीवानी. इसलिए जवानी दीवानी होती तो सब बता गया. अभी थोड़ी सोचिए यार, बाद में करेंगे ये सब और क्या. So people keep postponing this particular need to be entertained after retirement. और after retirement कुछ नहीं हुआ. कुछ नहीं होता. तब तक पहले वाला रिटायरमेंट तक पहुंचे किसी को गारंटी नहीं है. कितने लोग कोविड में निपट गए, सोचते हम रिटायरमेंट तक पहुंचेंगे, उससे पहले क्योंकि डेथ कोई मिस कॉल तो देती नहीं, ना व्हाट्सएप मैसेज देती है, भाई साहब मैं कल आ सकती हूँ. एक बार डेथ पहुंची व्यक्ति के पास, मैं तो बिजनेस टाइकून. चल टाइम ऑन चल. Excuse me, who are you? I'm a business tycoon. I don't need anybody without an appointment. Please. कहते गए क्या रे चंदन, अपन बस आती है, देख कर लिस्ट में नाम आया है, तेरे को निकलने का मेरे साथ. अच्छा really? Oh, जाना पड़ेगा. Of course, मैं death to जाना पड़ेगा. Okay, all right. यार लेकिन तू death तो पूरा दुनिया ब्रह्मांड में घूमती है, ऊपर नीचे, हाँ वहाँ कहाँ जाती तू? थोड़ा कुछ खा भी तो ले. तो उसको सरसों का साग, मक्की की रोटी, लस्सी, थोड़ा डालना, थोड़ा संदेश, ये सब खिलाया. उसको लस्सी भी पिलाई. लस्सी के बाद क्या होता है? नींद आ गई. तो सोला है, थोड़ा पावर नैप भी ले ले भाई, तो इतना बुद्धि बनती है. She takes a power nap also. So that's for the power nap. जब ये power nap मिली थी, उसने क्या किया? अपना ऊपर से निकाल कर नीचे लगा दिया. बोलो देख ध्यान गलती किसी से हो सकती है.
तो जाना कहीं और था, तो आ गए कहीं और। तो डेथ जो है अपना आधा घंटे बाद थी, डेथ लिखा, वाह व्हाट अ हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू सो मच, आई डिसाइडेड दैट आई स्टार्ट द लिस्ट फ्रॉम बॉटम। The point is that we cannot manipulate death. But often ऐसा कभी भी होता है that we prepone the death because we are not doing soul care. We should care for the soul by some spiritual activity. It can be some maybe 15-20 minutes, half an hour, and that's sufficient. The rest of the time we can be studying, doing our duties, but we should not postpone it. बिना इसको हम after retirement करेंगे. No, no, no. It's our need. और इंडिया की USP क्या है? You know, USP, unique selling proposition. What is USP of India? Spirituality. People come to India to experience spiritual culture. Technology के लिए जापान है, manufacturing के लिए चाइना है, perfumes के लिए पेरिस है, baseball के लिए US है, पर इंडिया लोग किसके लिए आते हैं? Spirituality. That's our USP. That's our speciality, Baba. Right? But there's only one country all across the globe who does not feel proud of their speciality. Rest all countries feel proud of their speciality. But there's only one country which does not feel proud of their speciality. Which country is that? India. Yes. India. और इंडिया के साथ भी क्या है ना? हम लोग स्पिरिचुअलिटी भी क्यों नहीं आते? Because India is such a backward thing, यार. It's a backward thing. We are modern, you know, we are yo-yo generation. How can you get spirituality and all that? अभी थोड़ी देर यार. थोड़ी देर यार, तो ये करना यार, बड़ी जीन्स पहननी है, बाल ब्लीच करने हैं, बिना ग्रामर के अंग्रेजी बोलनी है. तो चाहे हम फटी जीन्स पहले चाहे कितना यो-यो कर लें, Indians cannot become Americans. We cannot. We cannot. हमारे roots ही ऐसे हैं. We cannot become Americans. We cannot become Westerners. We cannot become Europeans. We cannot. Indians हम रहे नहीं because they want spirituality is a backward culture. तो हम लोग बीच में अटक गए. अगर गाँव से धोबी का डैश में यहाँ का लगा था, डैश क्या चलाते हैं? कुत्ता. हाँ. धोबी का कुत्ता ना घर का ना खाता. So कि हमारे इंडिया से बिल्कुल वही हाल हो गया. So ये loneliness हमको बहुत सता रही है. इसीलिए आज happiness index में इंडिया का रैंक है 119. So what? How come a land of spirituality, culture, purity, उसका happiness index में रैंक है 190? But why this is happening? Because धोबी का dash ना यहाँ का ना वहाँ का. That's the reason actually. Otherwise, we were the happiest people. We were. Like Macaulay, when he came to India, he gave this report from north to south, from east to west. I have not seen a single beggar. This is such a rich country. Somehow we have to break their faith in their culture. Somehow we have to prove them that our way of education is better than theirs. Then we can rule India. Otherwise, India is unconquerable. We cannot rule India. That was his report. So we have to come back to this soul care, spiritual care. That's so very important. So first is S, sharing your heart. S, soul care. Third S is spiritual knowledge. We should also take spiritual knowledge. ये कॉपी पेट का सवाल वाली knowledge तो हम लेते हैं स्कूल कॉलेज आपको दिल्ली में चाहिए हमने भी आपको मिली चाहिए बिल्कुल पर बॉडी में सिर्फ पेट ही सब कुछ है क्या प्री पेट पोस्ट पेट पीछे पेट पेट इसके अलावा और कोई ऑर्गन है बॉडी में यहाँ भी एक ऑर्गन है so we should have knowledge for the heart as well. No doubt for this we work so hard. For belly we work so hard. हमको याद है बोला करते कॉलेज में समुद्र जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी पर समझ में आता है, गिलास पर लिख पाते हैं, चुल्लू पर नंबर आते हैं, उसके डूब में मर जाते हैं. हम याद है कंप्यूटर साइंस सी, कंप्यूटर रेफरेंस, टाटा मैगलर, C++, object oriented programming, और एक कंप्यूटर रेफरेंस वो 1000 पेज, जावा, नॉट जावा. दोनों रेफरेंस पर हमने किया, हमने पढ़ा, किसके लिए? कॉपी पेट के सवाल साहब. But apart from this knowledge, we should also take spiritual knowledge. When Arjun was in anxiety, when he was perplexed, at that time he got spiritual knowledge from Lord Shri Krishna, and that is Bhagavad गीत. भगवान ने जो गीत गाया उसको बोलते हैं भगवत गीत. When Arjun was in anxiety,
तो वहां बोला कौन सा गाना सुनेगा तू? बॉलीवुड? नो. हॉलीवुड? नो. टॉलीवुड? नो. जॉलीवुड? नो. तो फिर कौन सा गाना सुना तेरे को? Krishna word. And then when Krishna sang the song that is Bhagavad Gita. That's Bhagavad Gita, the song of God. So just like Arjuna, he received it. And he became happy. He could conquer his indecisiveness. Similarly, we can also conquer that loneliness, that negativity, which dwells deep into our heart, into our consciousness. We can conquer it by spiritual knowledge. And spiritual knowledge, wow, man, we have got such vast amount of spiritual knowledge. Amazing. Now there is a proper course based on Bhagavad Gita in IIT Ahmedabad on management and leadership from Bhagavad Gita. There are 20 periods allocated. Like every year I also go to IIT Ahmedabad to teach few periods. क्योंकि ना जो टीचर ने बोला है, मेरे को प्रोफेसर ने बोला, कहते हैं एक बार प्रभु जी IIT अहमदाबाद के बच्चों को बस आप ये बता दो भगवान है, बाकी मैं संभाल लूंगा. और मैं वाकई में एक डैश में गया था IIT अहमदाबाद में, तो मैंने पूछा ओके हु बिलीव्स इन एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड? किसने हाथ ही बढ़ा दिया. उसने कहा मेरी इंग्लिश who believes in existence of God? English में नहीं बोलो. मतलब चलो उल्टा सवाल पूछते हैं. मैंने कहा okay who does not believe in existence of God? 80% हाथ खड़े कर दिए. मैं कौड़ी बाबा. 80% are atheists. अगर मैं 20 से बोलूँ, मैं बाकी 20% से आप लोगों ने दोनों हाथ खड़े लिए. We are agnostics. We are least bothered by the existence. Okay, all right. So वो जो मेरा सवा घंटे का सेशन था, मेरी स्लाइड शो तो रुक गया. They were there. How can you say that? How can you say that? Charles Darwin, big man, hey, oh. अब हमने थोड़ी साइंस तो नहीं पढ़ी हुई थी. So सवा घंटे का पीरियड, it was just we had discussion on whether God exists or not. और वो खबर पूरे आयम्स में चली गई थी कि भाई पंडित जी आए हैं, तो बाबा जी आए, गंजा आदमी आया है, सबने उसने सभी ग्रुप रैगिंग की उसने क्लास में. बहुत सारे so Lord Krishna. So second period there were more students also. They came for the second session, second period they came. But gradually they all, after all of their arguments being settled, they all believed. ये करने के बाद फिर प्रोफेसर कहता है सर अब मैं वापस संभालूंगा. The point is that in IIT Ahmedabad there is a proper course. It's a course. You can opt for this course in IIT Ahmedabad, leadership and management from Bhagavad Gita. It's happening. In Amogh School in UK, it's a proper course on the Bhagavad Gita. So it is happening. Spiritual knowledge की और लोग आज बढ़ रहे हैं, लोग जान रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं. And today I am so happy to see hundreds and thousands and millions of youths they are coming to spirituality. मतलब मैं सबको entertain नहीं कर पाता. I feel so helpless, but I feel at the same time very joyful that our Indian youth is coming back to spiritual culture. They come, they ask, they travel far, wide. They come and they ask questions. They are so good actually. What is happening? But in spiritual knowledge, it is so very important. जब लोग मुझसे पूछते हैं, sir, what inspired you to take to this life? आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, you were there as a project manager, you could continue, you were earning. आप continue करते हैं, आप ये अपना करियर क्यों चौपट कर लिया आपने? Actually मेरा पहले जो प्लान था, वो था that I would become a millionaire. I'll make lot of money and serve the poor people. मुझे गरीब लोगों की सेवा करनी. पर मैंने observe किया, people are less miserable because of body. But they are more miserable because of the mind. The mind is really crazy. So then I changed my plan from becoming a millionaire to becoming a monk to serve the minds of the people. तो मैं सोचा कि माइंड के लिए कैसे करें सेवा यार? गरीब आदमी को खिलाना है वो तो समझ आता है मेरे को, खाना खिलाना है इनको. But how to serve the mind? How to take care of the mind? So then I recalled that the knowledge, the spiritual knowledge, it made my mind very happy. So I should share same knowledge with everyone. So that's why then I took to this monk life so that I can share this knowledge everywhere. It is free of cost. Now we are not charged a single paisa from IIT Bhubaneswar. ये सेशन देंगे सर 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए. Why not? The session is absolutely free of cost. I came out of my love for you because you are my family. I was not satisfied with 5 of my family. मैं शादी करता था, इतनी बच्चे 5 लोगों का परिवार, that's it. But now all of you are my family. I've got so many sisters here, so many brothers here. So I came to IIT Bhubaneswar to
to share my love for you in the form of this spiritual knowledge. So spiritual knowledge makes the heart joyful, makes the mind joyful, made Arjuna's mind also joyful. So our mind can also become joyful by spiritual knowledge. So in this way we can make a transition from SAD to JOY. One is sharing your heart with someone, associating with somebody who is really trustworthy, mature, spiritual, sharing our heart. Another S is Soul care. soul care, caring for the soul. We care for the body so much, we should also care for the soul. And next S is spiritual knowledge. In this way, we can make a transition from SAD to JOY. Okay, I'll stop here. Hare Krishna. If anybody has any questions, let's take a few questions and then we move on. Yes, you have a question, please. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. हाँ जी. प्रभु जी भगवद गीता जब पढ़ते हैं तो उसमें Can you come forward? One, you can give mic Kalal to him. That was a special effect. Sometimes you're... आप आगे आ जाओ. हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए. Okay. Yes. हेलो प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी जब भगवद गीता पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं और उसके बाद 3 सेंसेस मतलब 5 सेंसेस है और 3 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा माइंड सोल और ईगो। थोड़ा सा आपको जोर पे बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं अदर देन 5 सेंसेस देयर आर माइंड सोल एंड ईगो। Yes. People talk about mind related to intellect. They talk about ego, not playing each other. But when it comes to soul, they run away in different directions. They don't want to discuss about it. So question ये है how to realize that we are soul. How to realize that we are soul? And what kind of practices we should do. How to realize that we are soul? Do you have feelings? Do you have feelings? Do you have emotions? That's soul. Mind, intelligence and ego do not have consciousness. They are subtle. They are like operating system. You know, like in a computer system, there's keyboard, there is a CPU, there is a screen. All this is hardware. So our senses, hardware. ठीक है, उसका operating system ये होता है Windows, Mac, Sun microsystem का they have operating system. Operating system is subtle body, mind, intelligence and ego. पर अगर electricity ना हो तो operating system क्या करेगा? Hardware क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, right? Electricity is required so that operating system can work and hardware can work, right? Similarly, soul, consciousness, feelings, when we have them, then mind functions in a mind way, intelligence functions in intelligence way, ego functions in ego way, senses work in senses way. Otherwise, nonsense, right? Because the soul is there, the battery, desires, right? So that's why. How to experience soul? What's the proof that we have soul? We are soul. Our feelings, emotions, like AI, artificial intelligence, focuses on making machines behave as close to human beings, right? पर चाहे आप कितना अच्छा रोबोट बना लो, कितना ही अच्छा, कितना ही sophisticated, या कभी ऐसा होगा that you crack a joke to a robot और रोबोट हंसे, तुझे हंसा के पेट में दर्द कर दिया रे, कभी ऐसा होगा? ऐसा कभी नहीं होगा. क्योंकि रोबोट के अंदर इमोशंस कभी नहीं आने वाले. इलेक्ट्रॉनिकली इट कैन बी वेरी सोफिस्टिकेटेड. वो चेस्ट कर सकता है आपके साथ, वो आपके लिए किचन में चाय बना कर सकता है आपके लिए, लेकिन वो फीलिंग्स, वो इमोशंस उसमें कभी नहीं आते बिकॉज़ सोल इज मिसिंग. सो सोल का रूप क्या है? वी ऑल हैव फीलिंग्स, इमोशंस. केमिकली अगर आप देखना डेड बॉडी में और हमारे में केमिकली वी आर सेम, पर वो उसको क्यों बोलते हैं डेड बॉडी? हम लिविंग बिकॉज़ ऑफ फीलिंग्स, consciousness, soul is here, right? अगर कितनी सुंदर लड़की हो, उसको हमने ब्राइडल मेकअप कर देते शहनाज हुसैन का, लैक्मे की उसको मैं लिपस्टिक वगैरह लगाऊं और हम आओ शादी कर लूं. ये केमिकली एकदम she is absolutely equal to any living girl. नहीं प्रभु जी, लेकिन ना वो मरी हुई है, right? Soul matters. देखो soul अगर होती है ना, even we are in a situation we can meet somebody. उसके अंदर सोल है, उसमें सोल निकल जाएगा, आप अकेले रह नहीं सकते बॉडी के साथ. तो डेड बॉडी होते हैं तो हम अकेले नहीं आते हैं, नहीं वो वहाँ
वो डेड बॉडी तो था पहले सोल थी उसमें और चली गई बॉडी से में. So soul we can experience in the form of emotions and feelings. That's there, right? Okay. अगला सवाल. हाँ जी. हेलो. हाँ सर, मेरे को पूछना था कि why is killing wrong? और जब हम किसी को मारते हैं, जैसे मस्कीटो को मारा, तो रीबर्थ होके वो ह्यूमन बीइंग भी बन सकता है. और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ये ह्यूमन बीइंग को मारना ज्यादा रॉन्ग क्यों है मस्कीटोस को मारने के साथ? He's very compassionate to mosquitoes. There's of course mosquito नहीं मारने चाहिए. उनको नहीं मारना चाहिए. You can use repellent that they can be repelled but not killed. That is best, of course. और एक इंजीनियर था, उसने देखा उसके बाद मच्छरदानी थी. मच्छरदानी में एक छेद था. उसने कहा यार इसमें मॉस्किटो अंदर आ जाएगा. इंजीनियर सामने अपना दिमाग लगाया, एक और छेद किया और दोनों छेद को पाइप से जोड़ दिया. मेरी इंजीनियरिंग उसने वाला दिमाग लगाया था कि बंदा एंट्री तो करेगा, इंजीनियरिंग नहीं करेगा. लेकिन although yes, mosquito maybe in case you can apply some say repellent, that is best, of course. But in case they become the cause of pandemic, then न चाहते हुए भी कभी-कभी mosquitoes को मारना पड़ जाता है, like that. लेकिन humans को मारना भी sinful है, mosquito को मारना भी sinful है, no doubt. लेकिन एक चीज है which makes the sin to human beings extra. Reason being the nervous system of the human beings is more complex than that of the mosquito. So when mosquito is killed, वो भी उसको pain होती है. And when a human is killed, हमको pain होती है. लेकिन because of the complexity of the nervous system, which is more in the human beings, we experience more pain than the mosquito. इसलिए the sin becomes more because the pain is more. Why pain is more? Because of more complex nervous system. That's it. Otherwise, दोनों उसको बचना चाहिए. You should not. ऐसा नहीं कि भाई mosquito तो आप निपटाओ, सुपारी दे दिया आपको. इंसान को नहीं. Both we should try to be non-violent. Okay, और कोई सवाल है? हाँ जी. किसके लिए? ऐसा नहीं कि ना रिवर्स होकर से ह्यूमन बीइंग्स होकर बन जाएगा. चलो मारो इन लोगों को. और वो इलेक्ट्रिक रैकेट आता है ना, वो लेके घूमते हैं. चलो तो मुर्शिद जीवन चल रहा था तो वो टक 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 टक. ये सब है. You can't do that, right? और ऐसा नहीं कि मॉस्किटो को ह्यूमन लाइफ मिलेगी ही मिलेगी. In case they have to go through further more into as per their karma, they have to behave with karma. Yes. Okay, हम लोग सब यार. सर मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप लोगों से घिरे हुए हो और फिर भी आप लोनली फील करते हो तो इसमें आपकी गलती है. तो ये स्टेटमेंट सही है. और अगर हम लोग लोनली फील कर रहे हैं तो उसे सॉरी एक्सरसाइज. तो ऐसा बिल्कुल होता है that was surrounded by people yet you are lonely. Because मैं कनेक्ट नहीं करता सबसे. मेरा नेचर ऐसा है. मैं सबसे कनेक्ट नहीं करता. पर सब है there are group of extrovert people. सब हा 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 ये करने वाले, ये करने वाले. और मैं सहमा. ये मेरा ऐसा होता है. वहाँ दिल्ली में देखा है बेचारे गांव से जो बच्चे आते हैं ना, सीधे साधे होते हैं. दिल्ली के सब खिलाड़ी होते हैं. डबल मीनिंग बातें करने वाले. अगर बेचारे मानो मतलब अमूल का इलायची दूध पिया ना, तो मैं दूध पी दे. अब दारू पिया जा. बड़ा हो गया तो दूध पिएगा तो. अब ये जो बेचारा अमूल का दूध पीने वाला इलायची फ्लेवर, तो ये अनकंफर्टेबल होता है. कभी-कभी फिर क्या करते हैं, दे कॉम्प्रोमाइज देयर इंटेग्रिटी, वो बेचारा दारू पीना शुरू कर देता है. कभी मैं ऐसा होता है. बट सम ऑफ द जिनका वैल्यू सिस्टम बहुत ऊंचा होता है, वो ये नहीं कर पाते. तो कनेक्ट नहीं कर पाते लेकिन किसी से. So ऐसे में मतलब क्या करें? ऐसे में you can have one or two even like-minded people. देखो कुछ ऐसे दुखियारी आत्मा के नहीं मिल जाएंगे आपको. तू भी अमूल को लाइक. तो ठीक है. साथी कॉलेज में. तो भले आपको ऐसे एक या दो मिल जाए, it's okay. देखो इंट्रोवर्ट होना कोई पाप नहीं है. इंट्रोवर्ट होना एक पर्सनालिटी टाइप. The people who are extrovert, they're very social, very outgoing. It's a personality type. Similarly, introvert
You know, there are people who get into this contemplation, reading and acquiring knowledge, and that's a personality type, that's perfect you. तो आपके जैसा कोई एक दो वाला भी अगर मिल जाए ना, it's perfect you, it's fine. सबके साथ अगर आप कनेक्ट नहीं भी कर पाते, at least you can socialize with them a little bit. You can wish them, hey, hi, good morning. That's okay. Or socialize one or two के साथ who are little like-minded, and that's it. अब बाकी for spiritual association, you can come to ISKCON Bhubaneswar. You get spiritual association in between आइए, थोड़ा कीर्तन करिए, थोड़ा गाइए, थोड़ा प्रसाद पाइए, come back, feel rejuvenated, continue with your studies. Okay, yes, any other question here? Okay, yes. अच्छा पीछे वाले yes, हाँ जी बोलिए. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna, हाँ जी. Prabhu ji, if you are present in a place where the place is very good, where good people are there, you are even performing better, but deep within आपको भी पता है कि you are not happy within. You are happy. You are not happy with what? Means you realize that you don't belong to that place. You belong. You do not belong to which place? The place where you are. IIT Bhubaneswar अच्छी जगह है. Prabhuji, I'm also from IIT. I did love our IIT. But सच बताऊं क्या Prabhuji, I have to struggle for what I am doing right now. Means खुश रहने के लिए I have to do. And अगर खुद की ही बस सुनो, I might have left this stream and I've joined something other. But फिर सोचना पड़ता है क्या लोग कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे कि पढ़ने ऐसा छोड़ दिया. All these thoughts right. हाँ, देखो कि दुनिया में किसी ना नहीं लिखिए. सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग. दुनिया में कुछ बोलते रहते हैं. When it is you are morally good, you know, you are morally just, that's okay. तो लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे. इस दुनिया का नाम है निंदा लोग. यार निंदा होती है, सबकी होती है. भगवान की हो जाती है. भगवान की होती है. ये गोपी के साथ भी डांस किए. ऐसे गोपी के साथ रात को डांस करना बहुत गलत बात होती है. तो भाई तो तेरी मम्मी के साथ नाचे. जिनके साथ नाचे उनको दिक्कत नहीं, तेरे को दिक्कत क्यों? कहते नहीं इतनी सारी गोपियां और भी तो एक नहीं है. ये कुछ है मेरे को. तो निंदा करने वाले तो भगवान की निंदा भी कर रहे थे, राइट? तो हम और आप किसी की बोली. तो इसलिए if you are morally good, morally you are just, you are working as per your duty, and still you are ridiculed. It's okay. It's okay. Yeah, there would always be people who do not like you. It's okay. मैं एक बार IIT दिल्ली में था मैं, और वहाँ पर कुछ लड़के बिल्कुल पसंद नहीं करते. कहते हैं गंजा क्यों आता है हमारे IIT में यार? क्यों आता है? कहते हैं गंजी को चुप कराना है. गंजी चुप कराएंगे. तो एक बार मैं I was giving lecture in IIT Delhi. तो sir, I've got questions sir. मैंने कहा हाँ जी बोलिए. सर आपने बोला everything is meant to be engaged in service to God, right? Yes. Sir, how to engage nuclear energy in service to God? अब देखते हैं बाबा क्या होता है. बम पड़ेगा भगवान की बने. Well, yes, nuclear energy we have, of course. We can use nuclear energy. We can use nuclear fission reaction in a controlled fashion to run the dynamos. By running the dynamos, we generate electricity. Electricity can be given to a mosque, to a church, to a temple. In this way, nuclear energy can be engaged in service to God. Sir, I want a person, sir. So he did not like me. तो मैं देख जगह नहीं मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन एक चीज सबको पसंद होती है. प्रसाद. तो मैं उसको गुलाब जामुन खिला के उसका मैंने सॉफ्टवेयर चेंज किया है. But there are people who don't like you. So it's absolutely okay. That's normal. No? But we should not have any bitterness for anyone. Somebody can have bitterness for us, but we should not have for anyone. अपना गेम अच्छा खेलना चाहिए. ठीक है जी? So it's okay. Relax. Okay, और कोई सवाल किसी का? हाँ जी, yes. ये तो भाई माइक का लाभ कहाँ पर है? हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा जी. जी मुझे ये सवाल है, जब कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और जब अर्जुन ने कहा कि आप मुझसे क्या गुरु दक्षिणा लेना चाहते हैं, तो कृष्ण जी ने कहा जितना भी ज्ञान मैंने तुम्हें भी दिया है
उसे भूलकर तुम अपने युद्ध के ऊपर ध्यान दो। तो अगर कृष्ण जी ने ये भी बोल दिया कि जो मैंने तुम्हें भी ज्ञान दिया उसे भूलकर युद्ध पे काम करो, क्या मैं कहाँ पढ़ा है? भगवान ने गीता में बोला चैप्टर 8 वर्स नंबर 7, माम अनुस्मरा युद्धेच, रिमेंबर मी एंड फाइट। भगवान ये नहीं बोला मेरे को भूल जा। He said माम अनुस्मरा युद्धेच। ठीक है, आपने पता नहीं कोई दूसरी पढ़ ली होगी गीता किसी और की, उसका नाम गीता नाम, उसका नाम सेनोरिटा। भगवान ऐसा नहीं बोल रहा है। नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, how to practice spirituality? So there's A, B, C, D of spirituality, which is practical. Anybody can do that. A for association with saintly people. Okay, maybe once in a week you should associate. B for books, holy books like Bhagavad Gita, Bhagavatam. We should study in between. थोड़ा पढ़ें. C for chanting the names of God. In case somebody is Muslim, can chant Allah's name. Somebody is Christian, can chant Christ's name. Hindu can chant Hare Krishna. But C for chanting the names of God. And D for diet of prasad. आप जो भी खाएं, कम से कम मान लो कि मेस में जो मिलता है, you just offer it to Krishna or offer to the Lord prayerfully and then have it. That's it. So A, B, C, D. Practical. A for association with saintly people. B for books like Bhagavad Gita, etc. C for chanting the name of the Lord. D for diet of prasad. That's it. You're done with spirituality. Easy, practical. Okay, all the sawal yes. हाँ जी. Okay, हाँ जी. माइक किसकी बात है? ये भी लीजिए. हाँ जी, क्वेश्चन बताइए जी. I want to know why some people take sannyas, like they will all their duties toward their family and society. They try to take. Who tries to take sannyas? Some people take. Some people take. It's a democracy. Freedom of expression. Right? Freedom of expression में misuse भी तो होता है country के अंदर, कोई use भी तो करता है. Right? So somebody becomes a sannyasi. Now sannyasi, what does that mean to be sannyasi? Sannyasi means having no family? No. Sannyasi means expanding family. Like like all of you are my family. I've taken sannyasi. In a way, I'm a brahmachari although. But अगर बोला जाए तो actually all of you are my family. Whole world is my family. So sannyasi means shifting from family of 5 members to the whole world. That's sannyasi. So it's good, na? And I expanded a family. You're my brother. Brothers, good family. Sannyasi. Yeah, good. हरे कृष्ण प्रभु जी. अभी आता है उसके ऊपर. Yes. मेरा प्रश्न है कि जैसे मैंने काफी अध्ययन किया है, तो भगवान और ईश्वर ये दो हिंदी व्याकरण में शब्द आते हैं. जी. जी, तो भगवान के मैंने जहाँ तक पढ़ा तो 6 लक्षण बताए जाते हैं. जी. वैभव ऐसे करके 6 होते हैं. जी. और ईश्वर होते हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस के कारण जो हैं. Yes. वो ईश्वर जिन्होंने हमें सब उत्पन्न किया है. जी. तो इस द्वंद्व, जैसे भारत में अनेकों दर्शन है, तो मैं इस द्वंद्व में फंस जाता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान तो है, भगवान है क्योंकि उनके 6 लक्षण वो सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन वो ईश्वर है या नहीं. भगवत गीता में वो ये भी कहते हैं गुणम कर्म चमे विद्यम चमे दिव्यम, और ये भी कहते हैं सर्व कारण कारणम. लेकिन वहीं कुछ लोग अनेक अलग अलग दर्शन वाले हैं, वो बोलते हैं कि श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने जन्म लिया और वो अपने कर्मों से वो दिव्यता को प्राप्त हुए. तो ये कैसे हम पता करें कि वो ईश्वर है या नहीं? धन्यवाद. ओके, कैसा लगा? So about Lord Shri Krishna, because somebody can say, oh ये ISKCON वाले तो कृष्ण की तो मार्केटिंग करेंगे. Amogh Lila Prabhu is the marketing guy of Lord Krishna. So what I say doesn't have any value. But what does Scripture say? Although in the history of creation, only one person has shown universal form. Who is that person? Lord Shri Krishna. Okay. Only one person जिनकी रासलीला में even Lord Shiva wants to participate as Gopeshwar Mahadev. Who is that person? It's Krishna. Brahma ji worships whom? Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. I worship you, O Govinda, Adi Purush. That's Brahma. तो ब्रह्मा जी और शिव जी इनके भक्त हैं, तो फिर बाकी का तो फिर कहने क्या? Right? So Lord Krishna is God, not as per ISKCON, but as per scriptures. Clear? तो जो लोग बोलते हैं भैया वो तो एक साधारण मनुष्य थे, हाँ साधारण मनुष्य इसलिए विष्णु को दिखाया
और थोड़ा गोवर्धन को 7 दिन साथ रहने से ऐसे उठा लिया, वो साधारण पुरुष उठा ही सकता है, गोवर्धन हम भी उठा लेंगे भाई साहब। So God can do that. देखो जिसकी 16,108 पत्नियां हैं, इन 16,108 पैलेसेस, और वो खुश है, इसका मतलब भगवान है। ठीक है, ओके, और कुछ सवाल है? हाँ जी, ओके, maybe some new hand. Okay, yes. Sir, is Lord Krishna supreme or Lord Vishnu? Okay, Lord Krishna is supreme or Vishnu? Perceive that? Actually, see, both of them are one. But Vishnu is the official form of God, and God at home is Krishna. ठीक है? I give you one example. जैसे कंपनी का मालिक, ठीक है? एक कंपनी का मालिक है, and he opens one branch in Bhubaneswar. और भुवनेश्वर में जो ब्रांच खोली उसने यहाँ पर एक CEO अपॉइंट किया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इस ब्रांच के अंदर ऑपरेशंस, फाइनेंस, HR, सारे डिपार्टमेंट कौन देखता है? The CEO. कंपनी में जिसकी रिक्रूटमेंट हुई, it happens because of CEO. तो कंपनी में सब लोग क्या मानते हैं? जो इस कंपनी में होता है because of CEO. तो एक मेरा मालिक है, मालिक stays in Florida and he plays golf. फोन करता है, Mr. CEO, this is owner speaking from Florida. I'm coming to Bhubaneswar. Please pick me up from the airport. Yeah, sure, sir. We'll be glad to have you, sir. Acha, is there any golf course in Bhubaneswar? Yeah, sure, sir. Please come, sir. We have got a nice golf course here, so please, sir. So then CEO goes and receives the owner. और कंपनी में उनको लेकर के आते हैं। तो कंपनी वाले क्या जानते हैं? कंपनी में जो भी आया है किस वजह से आया है? CEO साहब। और बात सच भी है, but today is an exception. आज कंपनी का मालिक आया है। एक कंपनी वाले क्या मानते हैं? जो है किस वजह से है? Because of CEO. और यहाँ पर हम उसे यार सब बड़े जगह है CEO साहब, it's going pretty well. नहीं बताओ golf खेलेंगे, हम golf जाएगा और golf course में जाकर वहाँ भी क्या करेगा? Golf. Florida में golf, यहाँ भी golf. No management at all. That's owner. Now let's take this example to Krishna and Vishnu. Krishna is owner. CEO is Vishnu. So Krishna does Leela, no management. And for management, for universal affairs, there is Vishnu. Whatever happens in the universe, it happens because of Vishnu. HR department, operations department, finance department, everything is happening. Whatever is happening because of Vishnu. So sometimes Krishna gives a call. Vishnu, this is Krishna speaking. So मैं आता हूँ, yeah, sure, please, Krishna, do come. We'll be glad to have you. अच्छा ये बताओ, आपको लीला करने को बढ़िया स्थान है क्या? Yeah, of course we have it now. Please come here. We have a nice place here. So when Krishna comes to this world, so Vishnu receives him. Welcome, Krishna. Glad to have you. Yeah, wonderful. सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सर, एक जो है उतना है, वो अपने निपटा दो। अच्छा लीला की कोई जगह बढ़िया जगह है, हम वृंदावन, ओके, ऑलराइट, कंटिन्यू विद मैनेजमेंट है। सो वहाँ पर भी लीला, यहाँ पर भी लीला, नो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज विद विष्णु। क्लियर? नाइस। ओके, और कोई सवाल? यस, हाँ जी, पीछे। धर्म का असली अर्थ लेना। धर्म का अर्थ है भगवान से प्यार करना। हो गया सर? When you love God, you naturally have compassion for everyone. So love for God gets reflected as compassion for everyone. Okay? Yes, अगला सवाल, हाँ जी। What to seek from Aghoris? What to seek from Aghoris? What to seek from? Aghoris. What to seek from Aghoris? We can pay obeisances to them, and we can wish them all the very best, and do not follow. That's it. Okay. Next. Why prasadam is important? हमारे प्रभुपाद जी बोला करते थे, not everyone can digest philosophy, but everyone can digest.
जैसे ना क्लास में लोग क्या कहते हैं, अबे कोई आत्मा परमात्मा के बारे में ज्ञान मिलेंगे यार, मर जाएंगे यार, असली माल तो बाहर मिलता है, वो आलू पूरी हलवा खाया। सो कलयुग में प्रसाद का बोलबाला तो हमेशा हमारे रिस्पॉन्सिबल में क्लास में होते हैं 20 लोग, प्रसाद में 100 लोग, क्योंकि 80 लोग वेट कर रहे होते हैं, वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ भाई, हो गया। सो प्रसाद इज इंपॉर्टेंट। सो प्रसाद होता क्या, प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद। Okay, yes, that corner. YouTube में थोड़ा देख रहा था एक वीडियो में, बोले कि हम कॉन्स्टेंटली यही सोच में रहते हैं कि हम हैप्पीनेस कहाँ से गैदर करें। यस। और इसीलिए हम डिफरेंट सोर्सेस के लिए जाते हैं, पर उन्होंने बोला ये सब अंत में मुक्ति से ही मिल सकती है। तो ये जो मुक्ति है, ये चीज अगर एक्सपीरियंस करना होता है तो ये कैसे होता है? देखो, मुक्ति के लिए पहले बात तो मरने की जरूरत नहीं है। Even being living, you are in the body, yet you can be liberated. Basically, liberation किससे चाहिए हमें? हमारी गलत attachments से, हमारे गलत संस्कारों से। Once you are free from all of this, from all the sinful reactions, all the bad karmas, all the bad sanskars, you are free. On the strength of devotion to God, you are already liberated. So for liberation, you don't have to die. Even being in the body, you can experience liberation. उसको बोलते हैं जीवन मुक्त। क्या बोलते हैं? हाँ, जीवन है लेकिन उसी में वो मुक्त हो चुका है। Even though he is in the body, but he's not. But he is off the body. But he is above the body. That's liberation within body. This can happen. पर ऐसा नहीं कि liberation जब तक नहीं हो तब तक आनंद नहीं है। थोड़ा आनंद उससे पहले भी हो सकता है। That's still there. That's possible. हाँ जी, yes. क्वेश्चन ये है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है, लेकिन ईश्वर की परिभाषा अनुसार ना तो ईश्वर का आकार है ना ही अर्थ है, साथ ही ना तो जन्म ले सकते हैं ना ही मृत्यु को प्राप्त। बिल्कुल सी बात है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम कैसे बोल सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है? और कृष्ण ईश्वर है। इनको ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर। तो यानी हम लोग भी थोड़े ईश्वर तो हम लोग भी हैं, बिकॉज़ हम भी थोड़ा कंट्रोल तो हम भी कर लेते हैं ना। फॉर्म भरना है, जाना है, काम करना है, उसके कान भरने हैं, थोड़ा कंट्रोल तो हम लोग भी करते हैं। तो मिनी ईश्वर तो हम लोग भी कंट्रोलर, बट कृष्णा इज सुप्रीम कंट्रोलर, सो ही इज परम ईश्वर। सो दैट्स व्हाई शास्त्र से ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर परम कृष्ण। सो देयर आर अदर ईश्वर्स एज वेल, बट परम ईश्वर इज कृष्ण, राइट? सो इन दैट केस ही इज परम ईश्वर। ज्यादा ये बात आती है ना, भगवान का तो कोई आकार नहीं है, वो तो निराकार है। तो भगवान निराकार है? ईश्वर क्या ईश्वर निराकार होता है? अगर निराकार हो तो कंट्रोल कैसे करेगा वो? तो निराकार है। अगर हम ये लेके चले भगवान निराकार है लेकिन साकार नहीं है, सो गॉड इज इनकम्प्लीट। एंड इफ यू से गॉड साकार है लेकिन निराकार नहीं है, अगेन गॉड इज इनकम्प्लीट, बट गॉड इज कंप्लीट। सो टू फॉर गॉड टू बी कंप्लीट, भगवान को साकार भी होना होगा और निराकार भी होगा। He has to be both, right? अब इस दोनों में कनेक्शन क्या है? जैसे मेरी आवाज चारों ओर जा रही है, ये आवाज साकार है निराकार है? निराकार। लेकिन जिससे आ रही है वो साकार। ये ट्यूबलाइट की रोशनी ये कैसी है? निराकार, लेकिन ट्यूबलाइट साकार। हवा जो पंखे से आ रही है वो कैसी है? निराकार, लेकिन पंखा साकार। साकार से आता निराकार। फूलों की खुशबू कैसी होती है? निराकार, लेकिन फूल साकार। इस सृष्टि में आप जहां भी देखोगे, फ्रॉम साकार कम्स निराकार। ठीक है? सो इन केस ऑफ गॉड एज वेल, गॉड इज ट्रांसेंडेंटली हैविंग अ फॉर्म, एंड हिज इफल्जेंस आउट ऑफ हिज बॉडी, दैट इज निराकार, बट हिज फॉर्म इज साकार। ठीक है? तो भगवान निराकार नहीं है। द इफल्जेंस ऑफ हिज बॉडी, दैट इज निराकार, बट ही इज हैविंग आकार, स्पिरिचुअल आकार। हमारे ऐसा हड्डी मांसल आकार नहीं, प्रोटीन कैल्शियम ये वाला आकार नहीं होता, सो निराकार, बट ही इज हैविंग स्पिरिचुअल फॉर्म, सच्चिदानंद,
that form God does have. इसलिए बाइबल में लिखा है God made man in his own image. That is, he has image. Right? He has image. Like Guru Granth Sahib ने लिखा है कर्ता पूरक निरपौर निर्वैर. What is next? Akal Murat. That means he is having a Murat, but that is Akal. That is, time cannot deteriorate that form. Akal Murat Ajuni Sabham. Right? So, if you see all the scriptures in depth, God is having transcendental, spiritual, divine, absolutely handsome form. Okay, okay, Radha beta, bol beta. Spiritual practice, why they are difficult? Because spiritual life is so difficult, it's very easy. You know, to sing, to dance, is it difficult? You dance so beautifully. No, very easy. What makes spiritual life difficult is our complicated minds. Otherwise, spiritual life is very simple. You sing, you dance, bhuk lagi, push-up, thak gaye, rest kar lo. Nice. But why spiritual life appears to be complicated? Because of our complicated mind. मेरा चश्मा को ब्लू कलर का है ना, मुझे सब कैसा नजर आएगा? Blue. So because we have complicated minds, so simple चीज भी कैसी लगती है? Complicated. Spiritual life is not complicated. Yes, in the beginning we can little bit we struggle. That's okay. जब चलना भी सीखते हैं, तो लड़खड़ाते हैं ना. It's okay. पर धीरे धीरे चलना सीख लेते हैं. Similar in spiritual life also. थोड़ा लड़खड़ाते हैं in the beginning, तो चलते practice करते, we become smooth walker. That's in spiritual life as well. ठीक है बेटा? राधा ने सवाल पूछा. सबके लिए. Thank you, राधा बेटा. Okay, yes. Okay, आपसे पूछते हैं yes. हाँ जी. Hare Krishna. Okay, मैं बोल. जैसे पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस रहता है कॉन्फिडेंस रहता है, तो वो पीरियड बहुत अच्छा जाता है. बट आफ्टर सम टाइम माया में आता है, कुछ चीजें आपसे गलत जाती हैं, तो वो मोमेंट फिर डाउन हो जाता है. फिर हम उस मोमेंट पर थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, फिर वो मोमेंट आता है कि हाँ वी आर फीलिंग गुड. बट ये कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा फॉर लॉन्ग टाइम? Spirituality practice करते हैं, but spirituality is like sin theta +1 -1 फिर +1 फिर -1. ये sin theta को tan theta कैसे करें? e to the power x exponential. ऐसे वाला कैसे करें? Spirituality वाला always how to have this constant motivation, how to remain constantly inspired, right? इस वाला आता है. जैसे जो लोग ना दारू पीते हैं, दारू लोग क्यों पीते रहते हैं? कड़वी होती है, क्योंकि संगति पीते हैं. खूब जमेगा ना, तो मिल बैठेंगे तो यार आप मैं और गैस पाइपर. वो तो भले डायलिसिस वाले हैं, लेकिन संगति पीते हैं तो लोग दारू पीते रहते हैं. नशा चलता है संगति में. उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी का नशा भी चलता है संगति में. So you should regularly have association of the spiritualists, the devotees, and then वो नशा e to the power x tan theta, otherwise sin theta. Okay, now last question. Let's take last question from a girl. मेरे को कोट कर दे कोई लड़की है, प्रभु जी सारे क्वेश्चन. Yes. Okay, here the question number is. अब आगे आ जाओ. और do we have the mic? तलाल अब रहे. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare ji, yes. I'm very fortunate to attend this session. Your t-shirt is very good. Yes, sir. In the pot of Coca-Cola, you have written Hare Krishna. Yes, sir. I have taken from ISKCON itself. Achha, okay, thank you. So, my simple question is, why can't we simply stop when it actually originates? Why should it go to the extreme and be stopped? Going to extreme and stop what? Sin. Sin. Yeah. So why can't it be stopped at the origination itself? So why can't we stop? Yeah, there are few intelligent people, they stop it in the origin itself. But usually sin के साथ थोड़ा मजा होता है ना.
sin करने में थोड़ा मजा भी होता है. There is mazza associated with sin. So that mazza element continues the sin. Means why won't we God stop somebody when he or she is committing the sin at the origin itself? When we sin continuously, other people will get affected, and that's the question. देखो होता क्या है, God does not interfere in the free will. भगवान हमारी free will में interfere नहीं करते. भगवान अगर हमारी free will में भी interfere करेंगे ना, then there is no difference between living person and non-living person. And why this free will is there? For love. There has to be choice, right? Without choice, there cannot be love. जैसे मान लो किसी लड़की को कन्वर्टी को बतूर के, एक चल I love you बोल, चल रहा है, बोल रहा, बोल गया यार, I love you, दिल से बोल, तो I love you बोल देंगे लड़की, ये प्यार है कि डर है? डर है, right? There is no choice, right? जैसे मान लो टापू पे एक लड़का है, एक लड़की है, लड़का बोलो है, उसके दांत ही मारा है, और लड़की बोले, क्या कर रहा हूँ उसे? शादी क्यों कर? अब लड़की सोची कि मैं गोरिल्ला से शादी कर सकती हूँ, ये एक लौकी ऑप्शन, अरे यार I love you too, शादी कर ले, ये प्यार है कि मजबूरी है? मजबूरी है, right? Because there is no choice. Whenever there is love, there has to be choice. तो भगवान हमको भी चॉइस देते हैं और हमारी चॉइस के अंदर इंटरफेयर नहीं करते. हम चॉइस से मिसयूज करते हैं तो भगवान को प्लान बनाते हैं किस तरह से हमको वापस लेकर के आना है, लेकिन भगवान does not interfere in choice. जैसे जीपीएस होता है ना, जीपीएस में लिखा हो कि go 1 kilometer straight and turn right and then go for roundabout take left and this उसको पूरा रास्ता बताया, पर आपने स्ट्रेट लेने के बजाय वैसे ही ले लिया दूसरा रास्ता, फिर क्या होता है, जीपीएस क्या करता है, फिर वो रीरूट करता है, राइट? ये पहले आप 15 मिनट पहुंचे थे और आधे घंटे पहुंच गए, ऐसे होता है. Same happens in God as well. He gives us a choice. When you misuse the choice, then He changes the plan. He changes the script so that we can come to Him. Again we break the rule. Again we deviate. Again we sin. Again more. So He keeps rerouting that someday we come to Him by that. But He does not interfere in the free will. Why? Because free will is required for love. Right? Without choice, there cannot be love. And Lord wants us to choose Him, not in majburi, not out of डर. भगवान चाहे तो मैं बुल्ले भेजे ना, भुवनेश्वर में जाओ जो हरे कृष्णा नहीं कर रहा मर थोड़े सा. और भगवान ने बुल्ले घूम रहे वही यहाँ पर, एक कौन हरे कृष्णा नहीं कर रहा है, सदा, ये प्यार है कि डर है? डर है. So God does not impose Himself upon us. He gives us a free will. उसका use करें, you can say God, I love you. Misuse करें, God, I leave you. When you say God, I leave you, that's the beginning of sin. Right? So I love you, man. It will stop. Really? Okay. Last question. Yes. सर वो एक्चुअली सॉरी सर, मतलब एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पाया, तो हाँ सर, तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं आज कॉकरोच को अगर मैं आज कॉकरोच को मारता हूँ और बाद में वो ह्यूमन बनता है, तो पुण्य का बंद होता है या पाप का बंद होता है? और सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि मतलब अगर चाइल्ड को देखो तो हम चाइल्ड को रोक के रखते हैं ताकि वो ऐसी मस्ती ना करे, ताकि उसको ही हर्ट ना हो. वैसे ही भगवान हमको रोक के क्यों नहीं रखते, ताकि हमको राइट पाथ करे हम और बाद में हमको मोक्ष हो जाए, क्योंकि वही सबसे राइट है. तो भगवान अगर है तो सबको ऐसा क्यों नहीं करते? पहला कॉकरोच को मार दिया मैंने, तो अगर वो नेक्स्ट बर्थ में ह्यूमन बनता है तो पाप का बंद होता है या पुण्य का बंद होता है? ह्यूमन मतलब सोल है, तो सोल बॉडी चेंज कर लेना. ओके, तो ये सारे कॉकरोच मरेगा तो ह्यूमन ही बनेगा, पर ऐसा हमेशा नहीं होता. बड़ा कभी बिल्ला होता है, कॉकरोच बेचारा सीधे इंसान बन जाए. धीरे-धीरे करके एवोल्यूशन ही होता है. भी somebody can become a human being. पर मान लो अगर ऐसा हो भी गया तो अच्छी बात है. अच्छा मान लो पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बहुत कंसर्न है उनका. कॉकरोच और मच्छर मनुष्य
के मनुष्य बने। जहाँ भी कॉकरोच रहते हैं, उनकी यहाँ बस्ती है, अपने 20 बच्चों के साथ में रहता है, वहाँ थोड़ा थोड़ा तो प्रसाद डाल देते हैं ताकि वो खा करके अगर मरे तो मनुष्य बन जाए। नॉन-वायलेंट वे ऑफ मेकिंग कॉकरोच इनटू ह्यूमन बीइंग, राइट? लेकिन मार के इसको चल बन जा ह्यूमन बीइंग। अगर वो नहीं बना तो उसका तो कान खुला हो गया तो। लेकिन पाप ऑलरेडी पाप बहुत है भाई, कितने इकट्ठा करना है? अगर नहीं बना तो रिस्क है ना। हाँ, तो इससे कंफर्म करो, हम उसको मनुष्य बना के छोड़ेंगे। कैसे? उसको थोड़ा जगन्नाथ जी का प्रसाद खिलाते हैं कि जय जगन्नाथ का एक मत शुभ जाता है। अरे ये तो पाप, ये पुण्य से भी ऊपर है। जगन्नाथ जी का प्रसाद खिलाया, पुण्य से भी ऊपर वाला पुण्य मिलेगा भाई। शाबाश, तुझा ताली हो जाए जगन्नाथ जी के प्रसाद की। होगा बस कॉकरोच और जो 84 लाख ह्यूमन थे, तो पहले सेशन चलते रह रहे हैं हमारे मच्छर प्रॉब्लम में, ठीक है? ओके, नाउ we'll stop here. We have got something else as well. So thank you all very much for being a very good audience. And asking very good questions. Really wanted to be here. Thank you very, very much. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। कैसा लगा आप लोगों को? तो आप में से कितने लोग चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स आपके कॉलेज में रेगुलरली होते रहें? प्लीज अपनी फीडबैक फॉर्म भर दीजिए ताकि हमको पता चलेगा कि आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे और हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। और इसी फीडबैक से हमको पता चलेगा आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं, तो फिर हम और इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। हरे कृष्णा। अब लास्ट इवेंट है, so we'll sing the prayers. We have small kirtan and you all can come and offer lamps. तो यहाँ से आप लोग आएंगे, लैंप ऑफर करेंगे, उसके बाद वहाँ पे बकेट से लैंप को बकेट में डाल देंगे और बाहर आपके लिए डिनर प्रसाद है। हरे कृष्णा।